Hello everyone, welcome back. In the chapter 4 torque, pressure and strain and temperature measurement, I started the last topic that is about the temperature measurement. In previous lecture, I explained about the introduction portion to the temperature measurement. Now in today's lecture, I will start off with the temperature measurement techniques. Before that, let us recap the previously taught topics. Okay, now the we I explained about the temperature measurement, then the various scales which were the centigrade and Fahrenheit scale. The centigrade is assigned from 0 to 100 degree, while Fahrenheit is from 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. Then there is ITC, International Temperature Scale. Okay, and in International Temperature Scale also the Kelvin and Rankine scale. Then the ITC, the table about this. Now in today's lecture, I will start off with the temperature measuring instruments. Now, the temperature measuring instruments may be classified either according to the range of temperature measurement or according to nature of change produced in temperature sensing element. जब भी हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो जो भी टेम्परेचर मेज़रमेंट है, जो यहाँ पे टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, किस रेंज में ये टेम्परेचर मेज़र करता है। अगर हायर टेम्परेचर है तो उसके लिए मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगी। सो वो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको टेम्परेचर को सस्टेन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू मेजर टेम्परेचर ऑफ सन, so how will you measure it? Well, the instrument cannot touch it. We have to measure through reference of light, that is the pyrometer can be used for that. Another, the if we want to measure temperature of the industrial furnace, so then also we require a material which can sustain such kind of high temperature. The nature of change produced in temperature sensing element. अभी जो भी टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट है वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने के बाद उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, उसके हिसाब से टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। सपोज मर्क्यूरी है, अगर उसका टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर सेंसिंग जो हमारा बॉडी है उसके कांटेक्ट में आने से क्या होगा, वो जो मर्क्यूरी का लेवल है वो धीरे धीरे राइज होगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बॉर्डन ट्यूब गेज है, तो उसके अंदर जो बॉर्डन ट्यूब है वो डिफ्लेक्ट करेगी एज द टेम्परेचर राइज, द प्रेशर विल बी जनरेटेड इन दैट एंड इट कैन डिफ्लेक्ट such mercury or vapor pressure. Okay, so what kind of change produced or nature of change produced in temperature sensing element? The best classification is probably that given by the ASME code on instruments, which is as follows. There are majorly two types. First one is the glass thermometers and second one is the pressure gauge thermometers. Now, glass thermometers, as I told about the mercury. Similarly, we can use the alcohol, pentane, and other organic liquids. On the other hand, there is the pressure gauge thermometer. What happens in pressure gauge? We use vapors or liquids as the actuating fluids. And there are basically two types of this thermometer. First one is the vapor pressure type. That means the partial filled with liquid, and other sulfur dioxide, ethyl chloride, methyl chloride. Now there is the principle Dalton's law for
water vapor, or we can say vapor, when the two different vapor at different pressure are mixed, the total pressure will be equal to the sum of partial pressure of both. Now this principle is also used here, and another way is those that are filled with liquid or gas such as mercury, alcohol, nitrogen. This type of gases are filled in this, and we can use this instrument for temperature measurement. Now instrument of first type have scales that are made of non-uniform divisions, whereas the instrument of second type have uniform division. What it says कि जो हमारा ग्लास थर्मोमीटर है उसके ऊपर जो स्केल दिया गया होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, मतलब जो मार्क्स है वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जो प्रेशर गेज थर्मोमीटर्स है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिविजन्स जो दिए हैं वो यूनिफॉर्म होंगे, यानी कि जो भी हम टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे वो हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा. थर्ड टाइप इज डिफरेंशियल एक्सपांशन thermometers. Now, you might have heard about the differential manometer. Same way, here it is the differential expansion thermometer, in which the differential expansion of two solids is used as indicator of temperature. That means the two metals are expanding due to the change in temperature, and that causes the measurement of temperature as by comparison between two bodies. Another type is electrical resistance thermometer. With the change in temperature, the resistance is calibrated according to that. So what happens with change in temperature, resistance of that wire changes, and we can change the resistance which is varying and convert it into temperature, which means जितना हमारा रेजिस्टेंस वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा. अगर टेम्परेचर राइज के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स उसके प्रपोर्शन में, मतलब कितना प्रपोर्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो वो हम मेज़र कर सकते हैं विद द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. उस उसको हमको कैलिब्रेट करना पड़ता है, यानी कि कैलिब्रेटेड वायर हम यूज़ करेंगे. यानी कि उस कैलिब्रेटेड वायर का अगर सपोज 5 ओम रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा. इन दैट पर्टिकुलर मैनर we can measure the temperature. Another way is thermocouple pyrometers. In thermocouple pyrometers, the electromotive force set up at the junction of two dissimilar metal is used as indication of temperature. Now, you might be aware about the Seebeck effect and Peltier effect and Thomson effect. Now, the Seebeck effect says that when the two different metals are at different temperature, suppose one metal is at higher temperature and another is at a lower temperature. One is cold and another is hot. So when the junction is formed by connecting these two metals, there will be produced EMF or potential difference between the two junction, which means the electricity will flow between these two junction and EMF will be produced. So this way can be also used. Now we can calibrate that EMF produced into terms of temperature. Now what happens, suppose there is one particular room which is at a higher temperature and the room temperature suppose increases. So what happens? Thermocouple senses, that means the thermocouple wire will sense and the temperature of that wire will rise and the potential difference will increase, which means the EMF will increase, and that EMF is calibrated in terms of temperature. So the rise in EMF
will give the rise in temperature, and we can measure the thermocouple. We can measure the temperature with the help of thermocouple pyrometers. Next method is optical pyrometers. Now, when it is not possible to measure the temperature by direct contact, we will be supposed to use the optical pyrometers. यहाँ पे ऑप्टिकल पायरोमीटर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसको टच किए बगैर हम मेज़र कर सकते हैं, जबकि जो बाकी के डिवाइसेस हैं उसमें जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसमें कांटेक्ट रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। यहाँ पे ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? with which the temperature is determined by matching the luminosity of hot body with that of calibrated scale, or by other means which utilize the visible radiation emitted from a hot body। यहाँ पे क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सपोज एक बल्ब है, तो वो उसकी एक ल्यूमिनोसिटी क्या है, मेजर ऑफ द लाइट एमिटिंग पावर। और कोई भी हॉट बॉडी है उसकी भी ल्यूमिनोसिटी होगी, उसको हमको मैच करना है विथ अवर कैलिब्रेटेड स्केल और बाय एनी अदर मीन फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, and which utilizes the visible radiation emitted from hot body. There is particular emissivity of a body. For a black body, it is equal to 1. The emissivity of black body is 1, while for white body it is 0. Okay, or we can say that uh, completely reflects the or emits the all the radiation over it. Then the radiation pyrometers, with which the temperature is estimated by absorbing radiation of all wavelengths upon a small body and determining the temperature of source from the temperature attained by the absorber. Another the non-contact type pyrometer is radiation pyrometer. यहाँ पे रेडिएशन पायरोमीटर में क्या होगा कि कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर हमको मेज़र करना है, तो वो हम कोई भी बॉडी है, हॉट बॉडी है, तो वो कुछ ना कुछ अपने अंदर से जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली एमिट करती रहेगी, जिसको हम रेडिएशन कह सकते हैं। जैसे कि जो सन की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, जो हम टेम्परेचर हम हॉट या फिर कोल्ड वो हम कैसे सेंस कर सकते हैं? थ्रू द रेडिएशन फ्रॉम द सन। There are various types of radiation: ultraviolet radiation, infrared radiation. Okay, so similarly, when there is a body which is at higher temperature, it will be emitting some form of radiation. Now, what happens with this device? The radiation pyrometer absorbs the radiation of all wavelengths upon a small body and determining the temperature of the source from the temperature attained by the absorber। अभी जो एब्जॉर्बर होगा वो क्या करेगा, जो भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस एब्जॉर्बर के टेम्परेचर से हम पता लगा सकते हैं कि जो भी हमारा सोर्स है उसका एस्टिमेटेड टेम्परेचर कितना है। सपोज इतने डिस्टेंस पे उसका इतना रेडिएशन है और इतना हमारा एब्जॉर्बर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो रेडिएशन पायरोमीटर है उसकी मदद से जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो हम मेजर कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इज थ्रू द फ्यूजन pyrometers. This is another one different method. What happens in this? Temperature is determined by the noting which of series of material with graduated fusion temperatures melt or soften when exposed to temperature under investigation। जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर फ्यूज हो जाएगा, मतलब कितना मटेरियल उसके अंदर फ्यूज हो रहा है, ठीक है, उससे हमको पता चलेगा कि फ्यूजन पायरोमीटर उसका जो मटेरियल का टेम्परेचर है वो कितना है। अनदर वे इज कैलोरीमेट्रिक pyrometer, in which by noting the quantity of heat removed in bringing the body of non-thermal capacity from the temperature to the
measured to some lower known temperature. यानी कि कोई भी बॉडी है उसकी एक थर्मल कैपेसिटी होती है हीट रिजर्व करने की, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो उसके अंदर हीट जो है वो स्टोर होगी, फिर वो हीट जो है वो रिमूव होगी, रिलीज होगी। यानी कि जो हीट रिमूव्ड है, सपोज देर आर टू डिफरेंट बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि जो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी है उसमें से कितनी हीट रिमूव हो रही है, तब जाके वो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी के साथ उसका टेम्परेचर मैच हो रहा है। तो उस थर्मल कैपेसिटी से लोअर थर्मल कैपेसिटी तक, यानी कि जितनी हीट रिमूव होगी वो हीट रिमूव हम मेजर कर सकते हैं विद द कैलोरीमीटर, और कैलोरीमेट्रिक पायरोमीटर से हम जो टेम्परेचर है वो पता कर सकते हैं कि मतलब इतनी हीट एमिट हो रही है, मतलब इतनी हीट रिमूव हुई बॉडी में से, यानी कि उसका टेम्परेचर इतना होगा। Another way is the cooler temperature chart, with which the temperature is estimated by a color temperature chart, sorry, by comparing the color of luminous hot body with the color given on chart. Suppose if you are hitting a metal, what happens with the increase in temperature? The color of it will be changing with the increase in heat. So according to that, we are have supposed to measure, or in we can estimate the temperature given in the chart. If the color of the body is reddish, then it will be somewhere around the 900,000 degree, whatever given in the chart. In this way we can measure the temperature with the various instruments. uh, these instruments can also be divided into electrical and non-electrical group. Somewhere the electrical instruments are used, and somewhere if it is hazardous to use electrical, non-electrical group instruments are also used. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.